Good morning, everyone. There is something that happened today in the park, so I want to share this with you guys also. It's a very good thing basically that happened, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुने इस चीज़ को और करें अगर आप कर सकते हैं तो. So there is this uncle who is 85 plus, or maybe you know 88, could be 88 also, because he's very old. So he comes daily to the park. He's the only one who greets people. वरना हर कोई बिल्कुल ब्लैंक फेस लेके वॉक करते रहते हैं अपना स्ट्रेस में, और किसी को देखकर कोई स्माइल नहीं करता है. बाहर ऐसा नहीं होता. इवन द स्ट्रेंजर्स दे लुक एट यू, दे स्माइल. सो यहाँ पे हमारे पार्क में दिस ओनली वन अंकल हु ग्रीट्स एवरी वन बाय राम राम बेटा. So today also, like every day, he greeted me. वो एक राउंड काटते हैं, फिर then he collects some flowers maybe for his puja or something, and then he does a little bit of stretching. कुछ उनका एक everyday routine होता है जो वो करते हैं. Stretching है, then few practices that he does, and then he goes. So 20-25 minutes के लिए he comes to the park. After my walk, I go and sit in silence and connect with myself. I do pranayams and all. So he watches me doing all that. So then he called me today and he said, "Beta, ध्यान से सुनना, okay?" He said that, "बेटा आप दिन में कितनी बारी हंसते हो, खुल के हंसते हो?" I said, खुल के हंसते हो मतलब I couldn't recall कि मैं कितनी बारी दिन में खुलकर हंसती हूँ. मे बी नहीं हंसती हूँ मैं. सो ही सेड दैट आपको अगर मैं कुछ बोलूँगा तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे. ऐसे बिल्कुल करूँगी अंकल, आप बताइए. सो देन ही सेड ही टोल्ड मी 2-3 प्रैक्टिसेस जो करनी है. एक्सपैंड करके अपना चेस्ट, हाथ खोल के, एंड जस्ट लाफ, हा हा हा, डू हो 5 times this, and हाथ जोड़ के, just how you're welcoming people, just laugh, ha 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 ha. So not that I didn't know this, but मैंने कभी नहीं किया था ये. So today I practiced that as well after my morning routine that I do, और मुझे बहुत अच्छा लगा. I felt that हम लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में that we don't get to connect with ourselves. हमारी लाइफ में कभी कुछ टेंशन, कभी कुछ स्ट्रेस, and even if when we are not working, still our mind is occupied somewhere or the other. So मुझको ये लगता है that everyone must practice this, and everyone must take out time to connect with themselves, be it for like 5 minutes or 10 minutes in the morning, but do that. It changes your life. Seriously, I have been experiencing this. Lately I've been getting up early, and even if I sleep late, last night I slept like at 1 o'clock, and I automatically मेरी 5 बजे आँख खुल जाती है. So पहले I used to feel very lethargic and fatigue होता था. कौन उठेगा, छोड़ो, सो जाओ. बट लेटली जब मैंने अपना ये मॉर्निंग रूटीन बनाया है, आई डोंट डू रिग्रेस वर्कआउट इन द मॉर्निंग. It's just that my way of connecting myself with the nature, and connecting with myself, my own self, and just sitting in silence, that makes a lot of difference. बाहर चिड़िया की आवाज़ आ रही है, पत्तों की आवाज़ें आ रही हैं. You're connecting with nature. That itself is a very very wonderful feeling. वो calmness, वो peace मिलता है when you spend some time with yourself, especially in the mornings. So आप ये ज़रूर कीजिए, and do practice what uncle told me to do, and हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए. Life is too short, and this is the only thing that I wanted to share with you. I hope this helps you in your life too.